Hello everyone, this is Dawal here and you are watching KD Architect. So welcome to KD Architect. So in this tutorial, you will find the object style settings. How can you control the different line weights in the plan in the 3D, and how can you change the line pattern and line color and different materials for the different elements. So let's understand the object style. So before we get started, I would like to request you to subscribe our channel for this kind of useful videos, and share it with your friends if you find this tutorial useful. So let's get started. Now in the manage tab, you will find the object styles over here. Just click on that. Now you will find this kind of dialog box for the object style. Now over here we have different model objects, annotation objects, and imported objects and analytics model objects. So now you can control the different styles over here. So over here we have first is model object. So जितने भी model objects है उसका settings for the object style आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो. नाउ इन द एनोटेशन ऑब्जेक्ट्स जो भी डायमेंशन है, टैगिंग है एंड सो ऑन, सो वो सारे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो. नाउ उसके बाद यहाँ पे फिल्टर लिस्ट है. सो यहाँ पे वी हैव डिफरेंट सेगमेंट्स लाइक आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पाइपिंग. सो आपको जो भी कैटेगरीज यहाँ पे एक्टिव रखनी है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो. राइट नाउ वी हैव ओनली द आर्किटेक्चरल ऑप्शन जो है उसको ऑन रखा है. सो यहाँ पे जितने भी आर्किटेक्चर कैटेगरी में जितने भी कैटेगरीज इंक्लूड हो रही है वो सारे यहाँ पे करंटली फिल्टर्ड है. So now let's understand the different line weight settings. How can you change the different line weights, colors and line patterns? Now let's understand for the wall. So यहाँ पे just go to wall section. So यहाँ पे in the wall, if you click on the plus icon, you will find the different subcategories in the wall section. So you can change the settings for the subcategories over here as well. So suppose let's understand the line weights. So line weight के अंदर यहाँ पे हमारे पास projection and cut दो section है, I mean दो column है. So यहाँ पे different line weight है and यहाँ पे भी different line weight है. So यहाँ पे currently it is 1 and for the cut यहाँ पे 4 line weight है. So let me show you what is the projection line weight and cut line weight for the wall. So let's understand. Suppose यहाँ पे ये जो wall है वो cut wall है in the plan, and let me draw another wall over here and just adjust the height for this wall up to 2 feet. Now यहाँ पे कोई भी line weight show नहीं कर रहा है because यहाँ पे जो थिन लाइन का कमांड है वो यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है. सो एक्टिवेट करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे थिन लाइन का कमांड पर क्लिक करना है. सो उसके लिए शॉर्टकट भी है TL. सो आप डायरेक्टली TL करके भी उसको ऑन ऑफ कर सकते हो. नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे क्लियरली लाइन वेट का डिफरेंस आपको शो कर रहा है. सो नाउ दिस वॉल इज प्रोजेक्शन वॉल बिकॉज ये वॉल जो है वो अपनी कट प्लेन के नीचे है. आई मीन वो एज ए प्रोजेक्टिंग एलिमेंट शो कर रही है. सो फॉर द प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पे हमने 1 लाइन वेट सेट किया था, एंड फॉर द कट वी हैव सेट इट टू 4 आई गेस. सो यहाँ पे उसकी थिकनेस, वॉल की थिकनेस जो है, आई मीन जो लाइन्स है वॉल की वो थिकर दिख रही है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन लाइन वेट एंड कट लाइन वेट. And a similar way you can see in the 3D. Suppose यहाँ पे जितने भी so first of all let's on the thin line option over here, and so यहाँ पे currently it's turned off. So let's turn on it. Now यहाँ पे line weight का जो settings है वो on हो गया है, and now
ओके, सो यहाँ पे हमने उसको सेक्शन बॉक्स को यहाँ पे कट पैटर्न में आई मीन वॉल कट हो इस तरह से हमने सेट किया है। एंड एज यू कैन सी जो कट हो रही है जो भी वॉल्स, वहाँ पे लाइंस जो है वो थिकर दिख रही है, एंड जहाँ पे वॉल जो है वो एज अ प्रोजेक्शन दिख रही है वहाँ पे थिन दिख रही है, बिकॉज वी हैव सेट द वन फॉर द प्रोजेक्शन एंड फोर फॉर द कट पैटर्न। सो दैट इज द मीनिंग। सो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट स्टाइल में जो भी चेंज करोगे वो इन द प्लान, इन द 3D, इन द सेक्शन, इन द एलिवेशन सारे में चेंज होगा। So just keep in mind whatever changes you made in the object style, it will affect on the plan, elevation, section and 3D view as well. So that is the important point. So let's move further over here. Now just click on the object style and let's go to wall category. So यहाँ पे कोई भी हम line weight change करते हैं, suppose just change the 1 2 3 for the projection, and for the cut let's change the 10 and let's see how it looks. Just click on the OK. Oh, it's too big, but for the understanding we can change it. So that is the meaning. So hope you had understood how can you change the different object style. Now let's go to object style again. First let's set to default by using the Ctrl Z, and now let's go to object style and let's go to wall category. Now यहाँ पे line का color है, so for the line color you can change the color over here. So currently मैं red रख रहा हूँ and just click on the OK. So as you can see जितनी भी line pattern है, I mean line जो है for the wall यहाँ पे वो red में show करे in the plan and in the elevation as well. I mean in the 3D. So this way like you can change the color for the lines. Now let's move further. So यहाँ से आप line pattern को change कर सकते हो. So यहाँ पे different line patterns है. Currently we set it to solid. So let's change the solid line to dash line over here and just click on the apply. As you can see 3D में dash line से सारी lines show कर रही है. So in the plan, in the 3D you can see the dash line for the wall. So now let's understand the settings for the window. So before that let's set it to default. Yeah, that's fine. Now let's see the window settings over here. So in the window category you will find a different subcategories such as elevation, swing, frame, glass and so on. So सारे के setting आप यहाँ से control कर सकते हो. So now यहाँ पे अगर मैं window में directly यहाँ पे उसका line color जो है वो change करूँगा, so it will not affect to window. So what is the reason behind this? As you can see in the 3D यहाँ पे show नहीं कर रहा है, but in the plan just a simple rectangle show कर रहा है. So now what is the meaning of these settings? And यहाँ पे settings जो हमने change किया but elevation in the 3D वो show नहीं किया, because in the window category we have different subcategories. So यहाँ पे आप सब कैटेगरी का सेटिंग्स यहाँ पे चेंज करके आप उसका लाइन कलर चेंज कर सकते हो. सपोज यहाँ पे एलिवेशन स्विंग है एंड फ्रेम एंड मूल्यन है, देन ग्लास है एंड डिफरेंट सब कैटेगरीज है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुंटिन का हम सेटिंग्स यहाँ पे चेंज करते हैं. सपोज यहाँ पे हम उसका कलर पिंक सिलेक्ट करके जस्ट क्लिक ऑन दी ओके एंड अगेन क्लिक ऑन ओके. एज यू कैन सी यहाँ पे विंडो में मुंटिन्स जो है वो यहाँ पे कलर उसका चेंज नहीं हुआ है, उस जो मुंटिन्स के लाइन्स है उसका, बिकॉज ये जो विंडो की फैमिली है उसमें ये जो मुंटिन्स क्रिएट किए हैं वो मुंटिन कैटेगरी में नहीं है. लेट मी शो यू. जस्ट क्लिक ऑन द विंडो, डबल क्लिक टू ओपन द एडिट फैमिली. नाउ यहाँ पे हमारे पास family edit mode है. now in the edit mode of family just click on the Muntin. so as you can see यहाँ पे उसकी कैटेगरी जो है वो जेनरिक मॉडल है.
सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने जो उसका सेटिंग्स चेंज किया था वो यहाँ पे लाइन कलर जो है वो फॉर द माउंटेन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। सो अगर हम जेनरिक मॉडल में उसका लाइन कलर अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होगा। सो लेट मी शो यू। सो जस्ट क्लिक ऑन द माइनस टैब ओवर हियर एंड गो टू ऑब्जेक्ट स्टाइल। सो जस्ट गो टू विंडो। सो यहाँ पे अगर आपको कोई भी कैटेगरी फाइंड करनी है इन अ क्विकर वे, सो जस्ट सिंगल क्लिक ऑन एनी कैटेगरी एंड टाइप द फर्स्ट वर्ड ऑफ कैटेगरी। सपोज मुझे विंडो फाइंड करना है तो आई विल press on the W. So as you can see directly you can go to window over here. Now let's see the subcategory. Now यहाँ पे हमने mountain का कलर चेंज किया था और वो चेंज नहीं हुआ। Now let's see the generic model जो है वहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे तो mountain का जो लाइन का कलर है वो यहाँ पे पिंक हो जाएगा। सिमिलर वे फॉर द जेनरिक यहाँ पे हम पिंक कलर ही सिलेक्ट कर रहा है। नाउ क्लिक ऑन दी ओके एंड अगेन क्लिक ऑन दी ओके एंड नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे जेनरिक मॉडल से जो फैमिली में मॉडल क्रिएट किया था वो यहाँ पे पिंक कलर में शो कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द ऑब्जेक्ट स्टाइल, लाइन कलर फॉर द एलिमेंट्स। सो नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो स्विंग शो कर रहा है इन द प्लान व्यू, इफ यू वांट चेंज दिस स्विंग color and then just go to object style, go to window category and just go to subcategory. Now यहाँ पे जो plan swing लिखा है वहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, लाइन वेट चेंज कर सकते हो। सो लेट्स चेंज। सपोज यहाँ पे मैं उसका प्रोजेक्शन लाइन 3 कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आई विल असाइन द सेम वैल्यू। नाउ यहाँ पे उसका कलर जो है वो हम रेड चूज करते हैं एंड क्लिक ऑन दी ओके एंड यहाँ पे लेट्स चेंज द लाइन वेट। सो यहाँ पे -1/8 में उसका लाइन वेट चेंज कर रहा हूँ एंड क्लिक ऑन दी ओके। एज यू कैन सी सारे सेटिंग्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। सो बिकॉज इन द फैमिली दिस डिटेल लाइन्स इज इन करेक्ट सब कैटेगरी, सो दैट्स वाई यहाँ पे चेंजेस सारे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। So this is how you can change the different settings for the object style and just one thing keep in mind, आप जो भी changes यहाँ पे in the object style में change करोगे वो सारे in the plan view, in the elevation section and in the 3D view also सारे में show करेगा। So just keep in mind. Now let's change the different settings. सपोज यहाँ पे एलिवेशन स्विंग का सेटिंग हम चेंज करते हैं। सपोज यहाँ पे हम उसका कलर ब्लू करते हैं एंड क्लिक ऑन द ओके एंड लाइन पैटर्न विल सिलेक्ट द चेन डैश एंड क्लिक ऑन द ओके। नाउ टू सी द इफेक्ट जस्ट गो टू एलिवेशन, लेट्स सी। सो यहाँ पे इन द एलिवेशन विल गो टू साउथ एलिवेशन एंड एज यू कैन सी यहाँ पे डबल लाइन विंडो है। सो यहाँ पे कोई स्विंग पैटर्न यहाँ पे शो नहीं कर रही है। जस्ट चेंज द विंडो टाइप। सपोज हम यहाँ पे उसका केसमेट विंडो टाइप यहाँ पे हम चेंज कर रहा है एंड एज यू कैन सी यहाँ पे जो स्विंग लाइंस है इन द एलिवेशन वो इन द ब्लू कलर शो कर रही है विद द चेन डैश लाइन। सो होप यू हैड अंडरस्टूड हाउ कैन यू चेंज द डिफरेंट ऑब्जेक्ट स्टाइल settings. So if you really like this tutorial and if you find this tutorial helpful, then please share it with your friends, those who want to learn Revit from basic to advanced. So at the end, thank you so much for your valuable time and please leave a one like and don't forget to subscribe our channel. Have a good day.